हेलो दोस्तों, वी आर बैक। MUSC रेड डेविल्स NCR इज बैक विद अनदर वीडियो। आपने देखा होगा हम पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, अपनी पॉडकास्ट में वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अपने कंटेंट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक का टाइम है। हमारे पास कुछ करने को नहीं है तो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। और आज एक और वीडियो आपके सामने। हमारे पास पैनलिस्ट और एक्सपर्ट नागार्जुन और मुन्नू, वेरी लविंगली नोन नागा एंड मुन्नू, हु आर FPL एक्सपर्ट्स। आज हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं क्योंकि लगातार आपने देखा होगा हमारे FPL नूब AB भाई ये वीडियोस करते थे, लेकिन हमने कुछ एक फ्रेशन अप करने की कोशिश की, हमने कुछ और व्यूज लाने की कोशिश की, आप लोगों को एक डिफरेंट फ्लेवर देने की कोशिश की। तो आज हमारे साथ मुन्नू और नागा। नागा इज करेंटली हमारी जो FPL लीग है, हमारे MUSC रेड डेविल्स NCR, Naga is running second right now. He has used his chips very wisely and has risen up among the ranks. Similarly, Munnu is another expert, but expert के नाम पे वो अभी धब्बा है, वो अभी एकदम ही नीचे हैं। he he hasn't moved up, but he's looking very strong. His idea behind FPL and his game weeks and wildcards are very strong as well. We are seeing a different flavor to it as well. So हम कोशिश करेंगे दो तीन फ्लेवर जो हैं हम तीनों के, we try to bring you a certain idea behind wildcarding. जैसा कि हमने देखा है कि पिछले पिछले गेम वीक में काफी लोगों ने गेम वीक 8 में वाइल्ड कार्ड यूज किया अपना। और देखा जाए तो कोई ज्यादा खुशी हुई नहीं लोगों को अपने वाइल्ड कार्ड से। काफी सबड्यूड ही रिएक्शन रहा। सिमिलरली उसी लिए हमने सोचा कि आज एक ऐसा वीडियो बनाए जहाँ पे आपको और अच्छे आइडियाज दिए जाए गेम वीक 9 के लिए। जो अगर वाइल्ड कार्ड करना चाहें ये आपके लिए है, ये जो पिक्स रहेंगे वो आपके लिए। इनमें से देखिए और चूज करिए और देखते हैं कि आप लोगों का क्या व्यूज रहता है, क्या उसका टर्न अराउंड रहता है। सो मुन्नो, नागा, आर वी रेडी? Yes, let's Yeah. go. तो जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन में हमारे मैंने एक ब्लैंक टीम शीट रखी हुई है। What we are going to do is we're going to ask the panelists, Munnu and Naga, and what are the best fits, what are the budget buys, what are the high scheme players that they are choosing ahead of game week 9 wildcard. और जैसा कि मैंने बताया, नागा और मुन्नू दोनों ही, नागा मुन्नू, नागा आपने वाइल्ड कार्ड यूज किया है क्या अभी? या मैंने वाइल्ड कार्ड एक्चुअली यूज कर लिया था जब डबल गेम वीक था बीच में, तो उस अच्छा, टाइम पे सो मैंने यू वर यूज किया अहेड था। ऑफ द कर्व। हाँ, और अभी 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 फिलहाल लास्ट वीक का जो गेम खत्म हुआ था बिफोर इंटरनेशनल ब्रेक, तो उस टाइम पे मैंने फ्री हिट यूज किया था। ये तो देखिए देखिए दोस्तों, हम लोग गेम वीक 8 में गेम वीक 9 में सोच रहे हैं। नागा ने गेम वीक 4 5 पहले ही अपना वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया। सो यू कैन सी हाउ अहेड ऑफ द कर्व ही इज। मुन्नू, आपका क्या व्यू है इसमें? व्हेन आर यू वाइल्ड कार्डिंग? मैंने ये वीक यूज किया वाइल्ड कार्ड, तो थोड़ा ऊपर नीचे चालू है, इंटरनेशनल चालू है, इंजरीज हाँ हो सकती है। हाँ वो हाँ हिसाब से अभी तो फिलहाल यूज किया हो, लेकिन वही अभी सैटरडे के दिन अराउंड 3:30 को लास्ट हो रहेगा, मतलब फाइनल डे। तो वो हाँ। हिसाब से उसके पहले कर लेंगे क्या होता है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन जैसे एग्जाम्स की होती है, मुन्नू जैसा उस हमारे एबी भाई से हम सीखे, लास्ट मिनट लास्ट चेंजेस। मिनट में लास्ट मिनट चेंजेस, करेक्ट करेक्ट। वो एपी भाई के जो एंग्जाइटी है वो हम सबके अंदर आ चुकी है। हम्म So, okay, we straight away go into the, picking the team. I'll start with Naga. Who's your first choice goalkeeper? एक्चुअली करंटली मैं खुद लिस्ट खोल के बैठा हूँ इधर, टीम Okay. वर्सेस टीम का। सो आई वुड गो फॉर होजे सा ऑफ वुल्स, because Okay. Wolves will be facing a struggling team, I guess West Ham, जो अब तक स्ट्रगल कर रही है। हाँ बाकी कोई भी अगर आप गोलकीपर देखोगे तो दे मे कंसीड, बिकॉज रामसडेल इज अगेंस्ट अप टोटनहम इज आल्सो इन फुल फॉर्म, राइट, एंड हाँ ब्रेंटफोर्ड एंड बोर्नमाउथ अगेन, both teams are playing okay, so both team can score a goal.
so you can't get a guaranteed clean sheet. Again, Chelsea and Crystal Palace. Chelsea though is a big gamble because they have got really a good manager. उन लोग Yeah. अभी ट्रांजिशन स्टेट में है, तो अगेन चेल्सी का तो इट्स नो चॉइस. फुलहैम वहां वर्सेस पे न्यूकासल, मैन, करेक्ट this आप game सही will कह be रहे हैं. a Fulham versus Newcastle will be full on tight. So it's a gamble to pick. ऐसे ही अगर fixture wise देखे जाएंगे तो to be honest West Ham versus Wolves. So I guess Jose Sa ये आपको clean sheet दे सकता है because Wolves is kind of defensive team and Jose Sa भी एक अच्छे goalkeeper है. So I would go for Jose Sa as a first choice goalkeeper. That's a good pick. जैसा कि नागा ने कहा, उनके फिक्सचर्स काफी लुक्रेटिव दिख रहे हैं सिवाय चेल्सी के. एंड ही एज ही सेड चेल्सी इज इन ट्रांजिशन पीरियड, तो वहां पे वुल्व्स के पास एक चांस हो सकता है चेल्सी को भी शायद हरा दें या फिर उनके साथ ड्रॉ कर लें, इवन दो इट्स अ डिफिकल्ट पिक्चर. सो अ गुड पिक बाय नागा ऑन होजे सा. मुन्नो, हु इज योर सेकंड चॉइस कीपर? सेकंड चॉइस कीपर देखा जाए तो अपना वार्ड ही ले सकते हैं आप सेकंड चॉइस कीपर वो हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा मेन कीपर अगर तुम साहा रख रहे हो, मेरा मेन कीपर रहेगा पोप, बिकॉज न्यू कैसल को भी एकदम इजी फिक्चर्स है, जैसे फुलहैम है, ब्रेंटफोर्ड है, फिर उसके बाद एक टफ गेम है वो है यूनाइटेड, फिर उसके बाद एवर्टन है, फिर उसके बाद एक और एक टफ गेम है स्पर्स, फिर उसके बाद एस्टन विला और साउथहैम्पटन है. तो निक पोप इज अ गुड पिक फॉर फर्स्ट चॉइस कीपर. लेकिन अगर तुम सेकंड चॉइस कीपर बोल रहे देन यू कैन गो विद वार्ड, क्योंकि वो तुम्हारे बेंच पे ही रहेगा मोस्टली. तो फिर शुड वी गो फॉर वार्ड और शुड वी गो फॉर पोप? अगर तुम ऐसा देखा जाएगा तो साहा का भी इज गुड, लेकिन निक पोप कैसा इंग्लैंड के नंबर 1 कीपर थे, उनको स्टार्ट मिला और एक या स्टार्ट मिल सकता है उनको. तो निक पोप इज अ गुड कीपर फॉर माय चॉइस एज अ फर्स्ट कीपर. एंड इफ यू गोइंग फॉर सेकंड कीपर देन यू नीड टू गो विद वार्ड ओनली, बिकॉज इज, अगर तुम बेंच बूस्ट भी यूज करते हो तो लेस्टर का कीपर हो, ही इज डेफिनेटली प्लेइंग ऑल द गेम्स फॉर लेस्टर. वार्ड का काफी फनी गेम वीक्स रहे हैं. He hasn't done much, and for a second choice, he's a good choice, obviously. But we'll go with Pope right now. अगर हम लोगों को थोड़ा budget constraint होगा तो end में we'll come back and change. So we are going with Pope right now. तो हमारे गोलकीपर सेट हो गए हैं. करीब 10 मिलियन हमने स्पेंड कर दिया है, 10 मिलियन से ज्यादा. Moving on to our defenders. Who do you think, Naga, should we go ahead with? I would seriously, मेरे को तो मन नहीं कर रहा है प्लेयर को लेने का because he will be facing us. So I would go Joao Cancelo because he's in red hot form. Cancelo is in red hot form. So yeah, Cancelo. I seriously don't want him to do anything against us, but still, Cancelo is a good choice in Yeah, order to he get he points. has So been yeah, I very would go for consistent. Cancelo. He has been very consistent. Yeah. और वो उसकी हालैंड को वो फीड करके ही रहेगा एट एनी कॉस्ट. ही विल फीड हालैंड, ये तो एक फिक्स है बिकॉज फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मैचेस केडीबी ने कुछ कम ही फीड किया है एज कंपेयर टू एनी डिफेंडर्स एंड ऑल. सो मोस्ट प्रोबब्ली कैंसेलो विल बी इन लाइमलाइट. सो लेट्स सी ये हफ्ते क्या होता है. That's correct. और हालैंड के बाद अगर कोई कंसिस्टेंट रहा है टीम में, it's either Cancelo and उसके बाद केडीबी रहे हैं. Cancelo is a no-brainer, obviously. That's a good pick. Again, Munnu, who are you going to pick? Second pick will be Trippier. Anyway, yeah, and there is option है, you go for Trippier or you go for Perisic. ये दोनों में से एक ऑप्शन है. लेकिन स्पर्स के जो टॉप 6 टीम्स है उसके अक्टूबर में 8 गेम्स है और कॉन्टे का कुछ भरोसा नहीं है. अब कॉन्टे राउलट शुरू हो गया, पहले पेप था, अब कॉन्टे हो चुका है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है. पेरिसिक विल स्टार्ट और पेरिसिक विल वोंट स्टार्ट. लेकिन एक अच्छा है, वो पॉइंट्स देके जाता है. लेकिन ट्रिपनियर ऐसा है, ट्रिपनियर उनका कॉर्नर टेकर है, उनका फ्री किक टेकर है, वो असिस्ट दे सकता है. तो ट्रिपनियर विल बी अ गुड पिक फॉर मी बिकॉज न्यूकासल तो अराउंडली वो पीएल के गेम्स ही खेलेंगे, बीच में और कोई गेम्स नहीं है. जैसे अपना चैंपियंस वो कोई भी यूरोप ऑफ फिक्चर या अपना यूईफा कोई फिक्चर्स नहीं है उनका. आई विल गो फॉर ट्रिपनियर सेकंड पिक. एंड अगर जिसको पेरिसिक लेना है दे कैन टेक हिम बिकॉज इज अ वेरी बिग गैम्बलिंग. वो खेलेगा या तो पूरे गेम खेलेगा या तो फिर 35 मिनट्स खेलेगा या तो 60 मिनट्स खेलेगा. लेकिन डेफिनेटली वो असिस्ट तो देके जाएगा अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो मोस्टली. सो वो एक कंफ्यूजिंग चॉइस है. सो यू बेटर ग्रो विद ट्रिपनियर. That's a good pick actually. Even for game week 8 में ये कहा जा सकता था Perisic
could be a be a regular starter. Even Perisic होने के बाद भी लोग ट्रिपियर लेंगे. Even I believe so, because जितना consistent ट्रिपियर रहा है, उसके अलावा डिफेंस में अगर FPL की बात करें तो कॉन्सेलो एंड ट्रिपियर से ज्यादा कोई कंसिस्टेंट रहा नहीं है. Similarly, my pick would be Reece James. I would definitely bank on. He's one player um, who has been as consistent, if not better. Perisic के points ज़्यादा हैं, but James is someone who has been consistent, who has always started. Even during the international break, he has started. He's someone I would blindly bank on. Perisic के साथ जैसा मुन्नू ने बताया यही है कि Conte is gonna use that Pep roulette वाला जो सीन है वो Conte roulette जैसा मुन्नू ने अभी बताया, तो उसको ध्यान में रखते हुए I'll go with James. Two more spots. Good. Munnu, sorry, Naga, you are up next. What do you think? Who? अब हमारे पास जैसे 3 प्रीमियम डिफेंडर्स आ चुके हैं. We can look for budget buys as well. What do you suggest, Naga? I would go for Connor Cody from Everton. Okay. Because Everton का फॉर्म देखे हम लोग तो they are pretty much नहीं बोलूँगा, but still I would say कि हाँ Everton का फॉर्म is good. Last 5 matches में 4 draws with 1 win. And while Southampton is bit struggling, so it's a big gamble again to take Southampton players. I would go for Connor Cody because वो एक goal scoring defender है. So yeah, Connor Cody for me. एक second. Connor Cody is Everton, right? Yeah, Everton. Added. That's a good pick. That's a very good pick. Okay, Munnu, you are up next. जैसे कि आपने देखा, Cody has been selected by Naga for budget चाहिए ना तुमको. You can go for budget में Dalot आ गया. You can for Dalot, or you can go for Williams, Nico Williams. दो options है because. So let's go for Dalot. जैसे हमारा club है, तो why not do the biasness and just add him because he's been a red hot form. He hasn't put any foot wrong. Even in the international break कल रात को ही हम लोगों ने देखा. He scored 2 fantastic goals. Yeah. Fantastic goals for Portugal. He's in a red hot form, and he gets our vote for the final defender. So जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, we have almost used what 100 में से हम लोगों ने 38 million use कर लिया है. We have 62 million left. We move on to our midfield. So Naga, who's your first choice in midfield? Midfield की actually बहुत लंबी list है तो but I would go for ये Crystal Palace का is Eze because Esberchi Eze. Okay. Because I'm also having the same player. मैं past 2-3 weeks से I'm using Eze, and I will guarantee you कि 5 points minimum 5 points तो Eze की तरफ से आने वाले, because वो ना मतलब kind of you can say underrated है. So yeah, Esberchi Eze should be a good backup, or you can say low cost midfielder for me. Good pick again. Eze. So आते ही बजट बाय, नागा का एक बजट क्रूशल बजट बाय. जैसे कि हम लोग देख रहे थे, जैसे एंड्रियास के साथ काफी हम लोगों ने पिक किए थे. A lot of FPL teams went with Andreas. We are going with Eze here. Munnu, who's your pick? It's if you go for big buyers, like big buyers में you are 3: Son, Salah, or KDB. There are 2 options you can keep 2 or you can keep 1. You can't keep 3, so better you keep 2 or you keep 1. So like Salah का forms देखते हुए Salah is not up to that point अभी तक game 8 week तक.
and Son suddenly charging up, coming up from bench and giving 3 goals and giving 12 to 13 points from bench. So, and KDB, whenever if he starts, he gives an assist. He comes from bench, then also he gives an assist. So it's up to you. If you have a budget team, you can keep 2 players. Like you can keep Son or KDB. You can keep Son or Salah. Or better and if you have very doubtful picks, then you can go for one. If you're going with one player, then I will prefer KDB. Okay. So अभी तुम्हारी pick अगर आपको एक pick लेनी हो तो you'll go for KDB. KDB, yeah. KDB can goal. KDB can give you assist. Everyone aim is to pass the ball to Salah. Not Salah, Haaland. Everyone aim is to pass the ball to Haaland. And if you're seeing Salah game, Salah is playing very wide. If you can see, so like Salah is a new provider to Nunes. If the Nunes can score, the Nunes, it's all up to Nunes. Like Nunes goal कर पाएगा क्या नहीं. और डियाज का भी तुम गेम देखा जाएगा तो डियाज भी अंदर से आके like outer wing से inner wing आके पूरा गोल मारने की कोशिश करता है. And Salah is like only giving the ball. So mostly we will go for Son or we will go for KDB. Chalo, we have done that. We have gone for KDB. Naga, who's your next pick? Guys, आवाज आ रही है ना clear? Yeah, Naga, you are audible. You're audible, Naga. Yeah, I'm audible now. अभी सुनाई भी आ रहा है मेरे को. So yeah, so next midfielder, I guess again a big buyer भी जा सकते हैं for an example, but नहीं, I will take Gabriel Martinelli. Martinelli भी बहुत अच्छा player है और वो भी consistent रहा है. वो मतलब he tries to make spaces and all. Martinelli is also a good pick. Like he's providing from the left side, he can provide a good assist. Like Martinelli का game और Diaz का game same है. Like तुम अगर देखना तो जैसे आर्सेनल में जीसस को लोग गेम बॉल प्रोवाइड करते हैं, वैसे साला अपना Diaz या तो इनर आके गोल मारता है या तो अंडर बॉल देता है. So Martinelli is also a good pick. Correct. I agree. Martinelli is a no-brainer actually, because nobody in the midfield with that kind of budget has been this consistent. I think Naga के साथ कुछ वो internet issue हो गया है, so he has bounced for a bit. We'll wait for him to come back. But coming back to Martinelli is someone who has been very consistent from day one. Even he matches the consistency with Haaland as well. बीच में एक game week आया था जहाँ पे even in the United game week he was a very subdued, but he almost scored there. If that goal would have stood, I think the picture would be a lot more different. So Martinelli is a no-brainer. I completely agree. We go from there. Who's your next pick, Manu? We can go for Andres Pereira. We can go for Andres, or we can go for Krop, or we can go for McAllister. Brighton is also playing good, but we need to see Brighton without Potter, how they are playing without Potter. Because जब तक Potter था, they were in the high skies. और Potter के जाने के बाद उनके दोनों गेम नहीं हुए. Because of some rail issues. So I think it's a tough pick to take because budget team banana, because the wildcard team we need to make a budget team, because like if there is someone who plays with all defenders, so like if you are making this team, so we can keep 4 defenders, 3 mids and 3 forward, or you can keep 4-4-2. So if you are keeping 4-4-2, then you need to have 4 good mid player. So it's better you go with McAllister or Krop or Trossard. You can go for Trossard also. But जैसा कि आपने कहा है कि ये गेम वीक कैसा है और ब्राइटन ने अभी काफी टाइम से खेला नहीं है, तो what could be the मतलब there could be a sign of jitteriness among the FPL players that they might not
the philosophy will change. They might not be able to produce the same way they were producing. So keeping in that mind, should we go for Grove or should we go for Andreas? Keeping that, we should go with Andreas. Andreas is better. Andreas giving a ball. He has taken so much chances. So Andreas is a better pick in a low budget. Andreas kahan ho? So, added and almost लोगों ने almost 70 million टच करने वाला है हमारा. एक मिडफील्डर और 3 फॉरवर्ड बाकी है हमारे पास. Since we have lost Nagarjun due to bad internet, we can move ahead. Now, who would be the next choice for you? We need someone who can give up points from bench if you're using bench boost. So you better go with Longstaff. You can go with Longstaff, or you can go with because you can't take a budget player. We need to see the budget player who will be there in the budget player. So you better go with Longstaff. It's okay. You go with Longstaff, or you go with Da Silva, who comes from bench, who sometimes starts, sometimes comes from bench. So it's better you go with the Silva. आप कह रहे हो द सिल्वा की बात, द सिल्वा को ले आए from Brentford. Yeah, from Brentford. Okay, Naga is back after छोटा सा ब्रेक लिया इन्होंने. Yeah, network issues था, sorry. So Naga, हम लोगों ने midfield complete कर लिया है while you were away for a short while. अगर आप midfield देखो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? Yeah, Da Silva, okay. Andreas and Da Silva, right? Andreas is big gamble man, क्योंकि मैंने भी ये last week में मतलब free hit जो था, free hit में I also taken that player, but मुश्किल से 2 points ही दिए उसने. और मैंने पहले भी जब wild card I have used, मैंने बोला था game week, I guess midweek game week में. So then also I have मतलब उस time पे भी I have picked Andreas, so वो थोड़ा gamble सा लगा. मतलब he didn't give enough points to me. So but still मतलब if you will play 4-3-3, so वैसे भी आप लोग मार्टिनेली, डे ब्रुयने और एजे रख सकते हो. बाकी एंड्रेस एंड डा सिल्वा सब्स्टिट्यूट्स में जाएंगे. But would you suggest, if you're suggesting Andreas can be changed, who would you like to bring if you change Andreas here? अगर बिग बाय की बात आई तो I would obviously go for योंगमिन सन. सन जा सकता है, but otherwise See, लीड्स this के is भी the प्लेयर budget right अच्छे. now. We have the budget of 33 million और हमको 4 प्लेयर चाहिए. Okay. So 4 प्लेयर चाहिए. Okay, so we can splash also. Or else do one thing, पोप को हटा दे और वॉट को डाल दे, तो बरोबर प्रॉपर हो जाएगा. ठीक है, देख लेते हैं. But so should we go? So we are going with Sun then, है ना? Yeah, Son मतलब फिर क्या है, क्या you can play De Bruyne, Martinelli and Son, proper 3 midfield if you play 4-3-3 formation. चलो, so now we have 21.2 million left in the bank, and we are moving on the end of the line. Three forwards, and I'm sure एक forward तो सबके दिमाग में set है. हम तीनों की दिमाग में एक forward तो set है. There's no guesswork here. So but I would not suggest you to take that. You would not? I will not suggest you to take that player or forward. अच्छा, so who's your pick? So to be honest, अभी सारे मतलब लो एक big buyer हो सकता है, but rest two would be a small players, or you can say I would go for Rodrigo of Leeds United. Rodrigo? Yeah. Rodrigo from Leeds. Rodrigo of Leeds United, and they are up against, I guess, Aston Villa, who is also Leeds United. Yeah. So they are up against struggling side Aston Villa. तो अभी injured चल रहा है. मतलब. What do you think? Rodrigo तो अभी injured चल रहा है. मुन्नू, नागा कह रहे हैं कि I would suggest not to go with Haaland, but go for
go for budget buys like Rodrigo. Do you think Rodrigo will be fit no, for? you better go. You need two big names. There Yeah, are 3 to 4 big names in forward. Like yeah, first is Haaland, second yeah, is Kane, third is now the newcomer Isaac, then Mitrovic. yeah. So ये चार में से at least you need 2 players in your team. Because जीसस का नाम अभी कम हो रहा है, जीसस का आज प्राइस भी फॉल हुआ, Exactly. जीसस का So, आज प्राइस भी फॉल हुआ, so तो वो हिसाब है because we're keeping Haaland for now. Haaland हम हम्म लोग रख लेते हैं. Who's gonna be your next two pick? I think Naga has disconnected again for some reason. That's okay. But moving forward, who हम्म, could be the two other? I think Mitrovic अगर and you are Isaac were a good हाँ choice, but Isaac I think has been injured last game week. So उसकी जगह किसी so और को he लेना I पड़ेगा. उसकी जगह if you take someone then you have Ben Johnson from this Benjo. Nottingham Forest. Then there one Auric player from Nottingham Forest who scored the goals. I forgot his name. हाँ, okay, I understand. मैं उसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ. जॉनसन नाम है उसका वैसे. नहीं एक और एक AYIUE करके कोई तो प्लेयर है. हाँ, Avenvi. Avengi, yeah. ये He's रहा ना also नीचे. scoring goals. He's also scoring goals for them. And now if you like you do one thing, you just remove Pope and put Ward. Let's put Ward here. है एवर्टन में कि लेस्टर सॉरी Leicester City. we put Ward there. हमारे पास So 4.6 we आ have गया. 4.6 then also. So 4.6 में forward you won't get anyone. ग्रीनवुड आएगा मेरे को. Maybe Greenwood will come. ग्रीनवुड है किसका? ग्रीनवुड आई थिंक Greenwood is in Leeds. हाँ. लेकिन ग्रीनवुड को जितना पिक किया था ग्रीनवुड ने अभी तो कुछ किया नहीं है. हाँ, तो वो बेंच में ही रहेगा ना. योर टू फॉरवर्ड्स विल प्ले हम्म ऑब्वियसली. योर टू फॉरवर्ड्स विल प्ले. हु इज द वेयर इज इट? ये रहे एक्चुअली. So this is what it's looking like. Do you think we should continue with A1B? No, if you have 6 points na 6.1 na, so Isaac is also 7, Mitrovic also 6, 6.4 or 6.3 something, Hmm. 6.9 Mitrovic. So like you need to change, like मैंने पहले ही बोला, like you need to change your mid players now. Like I told you, if you're making a budget team, like you can keep Salah, Kevin De Bruyne और सन में से कोई एक ही रख सकते हो. Correct. अगर तुम if you change your team, if you want some good striker like Mitrovic or Jesus or as well Tony, then you need to remove Son or Kevin De Bruyne में से कोई एक. Hmm. और वो दोनों की जगह you can put Zaha, Madison you can put. Yeah. So that's a tough call to pick a good mid pick. Hmm. So I think what we can do is हमारे पास सिटी के 3 वैसे ही हो गए हैं. Why not we kind of dump हाँ, KDB? Dumb De Bruyne, हाँ, yeah, it's okay. We Dumb can De dump. Bruyne and go for Zaha also. You can go for Zaha or Madison. I think Madison is a good Go choice. okay, you go for Madison then. Or चलो else you can go for DS also if you want. You can go for DS also. नहीं Because चलो कोई तुम. तो चाहिए भाई, कोई तो I'm चाहिए I'm लिवरपूल वाला, I'm feeling अच्छा. कोई तो एक चाहिए. कुछ तो होगा भाई. कुछ तो होगा. कुछ तो करेगा लिवरपूल वाला, एक तो चाहिए हाँ चलो. लिवरपूल वाला, या तो चलो तू. we can go with Diaz. Let's go with Diaz. So now we are left So with now like you have 10. 10.2. So now you can have a big choice to make. Like you can go for no, you can't go for Kane. You can go for Tony. You can go for Mitrovic. You can go for Jesus. Uh, So you what, have do so many what, options now. what do you suggest? So who do we bank on now? I will go for Mitrovic anyway because कल भी उसने 3 गोल मारे with play I against Sweden. I hope he is not injured. Obviously. हाँ मैं सुना तो था injured है, लेकिन you have 1 week, so it's not a big deal. Yeah. So this is how our team is looking, Munnu. We have
we have done quite a work here. हमारे पास समय भी कम है. हम लोग will end the video very soon in next couple of minutes. But to look at it, कीपर में होसे सा और वार्ड है, और हमारे डिफेंस में कैंसलो, ट्रिपियर, जेम्स, कोडी, डैलोट. Dalot is a differential pick, I feel. Not many would be using. Similarly, जैसे नागा ने हमें suggest किया, Eze and Da Silva is either two budget buys here. But we have invested heavily on the other three, which is Luis Diaz and Son. Martinelli has been consistent, and hence he is a no-brainer. Another no-brainer was Haaland, just like Cancelo and Martinelli. But the differential here would be Mitrovic again, and Greenwood is a sacrificial buy. So this is our wildcard team, guys. For this team, we can go for 4-3-3. Like 4 in will be Cancelo, Trippier, James, or Dalot or Cody. Any you can take. And 3 midfielder you will have Diaz. No, you need to go for 4 because Greenwood is a lucky charm. Or you can you can change Greenwood also. We have money in the bank. Yeah, we have 3.3. We have 3.3. So we can change. We can remove Greenwood. We can bring here Isaac, or we can bring Tony. Okay, Isaac to injured hai, but for if you suggest, then we can go for Tony, right? We can go for Tony. So that makes our wildcard very, very, very meaty. एकदम धुरंधर wildcard team बना ली हमने, thanks to Munnu and Naga. So many permutation and combinations. We looked like we were messing up with our forwards, but ended up with a good option. Mitrovic has been in hot form. Haaland, तो उनके बारे में कुछ कहें तो फिर कहना मतलब पाप है. But बस अब ये है कि इंजर्ड ना हो जाए, बस एक वो दुआ है, इंजर्ड ना हो जाए हालेंड. इंजर्ड ना हो जाए या फिर पेप कॉन्टे की जगह पेप रूलेट ना चालू हो जाए. नहीं, हालेंड खेलेगा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक में भी वो आराम ही कर रहा है, क्योंकि नॉर्वे के कोई गेम्स मोस्टली हो रहे हैं इधर. कल ही तो गेम हुआ है, कल गोल मार दिया हालैंड. ओके. He has played 23 games he has played, and now he has 22 goals for the country. जब वैसे ही है भाई, हर जगह जैसे स्कोर कर रहा है वहीं वहां पे भी स्कोर मारता है. Unbelievable streak. So yeah, दोस्तों, we are coming to the end of the video. This is our wildcard team for you, and hope you like this team, and hope you pick up some of the options we have given you and make a big splash and big dunk on the game week 9 wildcard. Thank you so much, Munnu, अपना valuable time देने के लिए. Just like I said, Munnu has been a great addition to our FPL league, and he has made some very intelligent picks here. I hope everyone gets advantage of that. Thank you for watching us. Please like, share and subscribe. और हमें देखते रहिए, हमें खूब प्यार दीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे. Thank you so much. Thank you. Of the recorder.